Welcome to TailoBill, India's best tailoring business management application. Let us log in. Username is admin. Password is 12345. As soon as we log into the application, the first thing we see is the list of upcoming deliveries or delayed deliveries. Upcoming deliveries in the sense deliveries which is coming within 2 days. Now let us exit with this application from this form, and this is the dashboard of the application. Here you can see the number of orders booked today. All sort of business statistics will be listed here. The left hand side which is shown, this is for retail inventory management module, which includes purchasing, purchase return, sale entry, sale return. So basically you can buy fabric, sell fabric, you can buy ready-made, sell ready-made. It's kind of trading segment of the application. Now on right in the center of the screen you can see this part is the tailoring business management module. This complete tailoring business management module is covered in this particular part of the application only. Let us begin with the application. For the easy understanding, you can understand this segment, which is status wise item count. Here you can see total pending item, total in process item, total in trial item, total ready for delivery item. So basically you don't need to bother about what sort of inventory you have in your store. Complete inventory will be listed and given you a very crisp count of your business management statistics. Let us start with this new order button. As soon as you get a new customer, for example any customer, we start some billing. Okay, so when you have a manual work, you just get a bill book, you start writing their measurements, you start there writing their mobile number, name, his mobile number and name, and the number of items, and close out the invoice. But in computerized tailoring business management, we will start this way. We'll first press enter. The first thing is company selection. In most of the cases, people do have only single company, but there are certain businesses, those who operate with two business names. When I said two business name is, you can consider that one business is used for corporate uniforms and one another business name is used for retail tailoring. For other thing is, you can consider like one business company is registered for ethnic wears and another company is registered for general tailoring. So basically there are certain customers, those who are using two companies in the same application. Now let us go ahead. Once I select the company, I will press enter. There are three type of orders that I can create in this application: alteration, free of cost, new order. So when I say alteration, what will happen is I'll be able to book an order at amount some value which is less than the actual stitching price. Actual stitching price means, for example, if I stitch a shirt at 400 rupees, so alteration, I am of course not going to 400 rupees. I'll be charging 40, 50, 100 rupees to the customer for some alteration job. So alteration will allow you to reduce the actual stitching value and insert any random number. And another one is the FOC, free of cost alteration. So this is free of cost alteration, which is also called as goodwill alteration, which is also called as rework alteration. So in this alteration, we do not charge any penny, any amount, any rupees to the customer. So let us start with the new order type. Go ahead. Order series DEF. Now what is order series is? In accounts terminology, you must have seen in many times that every invoice number is prefixed with the financial year. Say 16, 17, 2017, 18, 2018, 19. So this way you will be creating your order series, whatever the series is, because for every financial year you will be able to reset your order number. Now go ahead. Order date would be current date, but for some reason, if you were not able to enter some order of your previous date, you can also do previous order date entries. For example, due to power shortage, due to power failure,
you were not able to access your computer software while booking an order yesterday. So whatever order you have taken in that particular time frame, you can enter them later in the software by choosing the backdated invoice entry. Now delivery date. Delivery date will come automatically with the gap of 7 days. So when I say 7 days, it is not a fixed one, it is configurable. We have given a configurational setting in the software setting part of the application. You will be able to set the difference to 7 days, 15 days, 1 month, whatever the random date or number you want to set up. Now other thing is, once even if the default date is for example 7 days, and if your customer is expecting as an urgent delivery for day after tomorrow, and you wish to give him a delivery date, then you can select a delivery date from the calendar as well. Now let us go ahead, that is trial date. Trial date is in most cases applicable, but in certain cases it is not applicable. Let us understand the case. The first thing is, for example, it's an ethnic suit. There is a trial, very important. The second thing is, if it's a blazer, waistcoat, or something which is very costly outfit, so trial is applicable. But in case if it's only a shirt, so few businesses will not actually accept or allow or actually give the trial to the customer for one shirt. But of course, if there are 10 shirts, customer will the business will be interested to give a trial day to the customer, because the business cannot afford the what we say improper fitting for all 10 shirts to get it into rework of re-alteration for 10 shirts. Instead, he can just give a trial to one piece and make a perfect one for the other. Now you can see trial date is shorter than the delivery date, so I'll suggest not to take the trial date. I'll just deactivate the trial date. I'm not giving trial date to the customer as this is an urgent order. Let's go ahead. I can select a customer from the list, Ali Raza. So this is something very easy. For example, I can just start typing and I can choose a customer. Say Sahil, enter. So as this customer is new one, this is the very prominent feature of the application. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक नया कस्टमर क्रिएट करेंगे, साहिल सूद 8237796788, ये मोबाइल नंबर होगा, एंटर। अब ये फीचर जो है, ये फीचर आपको देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। यहाँ पे व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज you can have multiple customer on the same mobile number. So what exactly is this is, for example, there are 5 people of a same family coming to you and booking an order for you at your store, and they just don't want to give you all 5 numbers for 5 people. They want you to notify all of them on the same mobile number, which is a unique one. So you can have multiple people on the same mobile number. Here we are doing same thing. We consider that Sahil Sood is the relative of the customer, which is shown earlier in the list. Now let me add new. If I click on let me add new, Sahil Sood will be added with the same mobile number with the existing customer. This is the unique feature that you can see in any software application, which will allow you multiple customers on the same mobile number. And one of the best feature is you also can create multiple customers on the same name with a different mobile number. Let us go ahead. Blazer 2 quantity, enter. If it's an urgent, I'll tick mark it. Otherwise, I'll just leave it. Enter. Chart number is of no use at the moment. I'll explain it later. Go ahead. Rate 6250. Enter. Pattern charges. If you are not sure what exactly the pattern charges would be for this blazer, leave it for the moment. Go ahead. Fabric amount. Fabric amount, you can say 3500 is the fabric value. Go ahead. Enter. Now see, you have added 2 blazer into the bill. Click on this measurement button, this row and the column where my mouse is. Double click here and you will see the measurement terms. These measurement terms are actually customizable. Means you can add n number of measurement terms. You can resequence them. You can change the terminologies. You can add or edit any sort of measurement terms. On right hand side, you can see the list of styling and fashion options. These are the styling and fashion options which you use in your regular
order booking procedure. For example, if it's a trouser, you can say no pleats, cross pocket, two back pocket, no watch pocket. All these are your styling options. But if it's a shirt, you can say regular collar, broad cuff, outer putty, manila fit, or apple fit, or slim fit. So these are the styling generally billing options or styling options you can just have with your item. Select them together, and as you go on keep selecting these styling options, you understand what exactly the pattern charges should be charged to the customer. Along with that, here is the remarks section. You can say remarks area of 200 characters, or this is again a remarks area. This is fashion remark. That means just the name remark 2. You can say remarks 2 with 200 char length. Now these two measurement terms, you have entered the measurement, you have selected the style, you have given the remark section of 200 characters, you have given the remark section of remark 2 with 200 characters. Now here you can see there are multiple stylings, and as I told you, these stylings would be unlimited. You can create n number of stylings into the application. Now if you increase these styling options into the software for a very long, then the scroll bar will turn to be very small, and you may not remember what all items you have selected from the top till the bottom. So to understand how many of them are selected exactly, you can click on selected button. Once you click on selected, it will show you only selected items. Now if you understand that you have selected something wrong, say if you understand that lining half is something selected which is wrong, you can just untick it, click on edit style, go back, it is lining half, and you say lining full was the expected one. Now again click on selected to understand if you have selected properly. Click on edit style. You can leave it selected and click on save measurement, or else if it is edit style, then also you can click on save measurement. Now if someone brings you a picture, for example, customer nowadays pictures, people are actually much more interested in having something which is linked with the which they find on the Google. So one thing is the software will accept you to allow you to change or draw something over this box. You can draw something in this box, but as we understand, this is not very easy, or this is not very user friendly for the people, those who are not that much tech savvy or something. So we will not actually suggest to go for this sort of designing. Instead, you can go to load image button, click on load image, and locate your file in your computer. Select that picture, let's say tulips. I select it and say OK. So I'll be able to see this picture in the area, and I'll click on save image. So this image will be saved with the order. Now click on exit, click on save measurement. Measurement is also saved. So at the moment measurement for two blazers is saved. Now for example, if I need to add shirt again, okay, customer is willing to have one shirt added to this same bill, you can do that. For example, pattern would be 175 and fabric would be 895. Enter. Now you have added a shirt. Let us go for the shirt measurement. Double click on this area. Measurement terms are not attached with this shirt, so I'll just cancel it. I will delete this item by clicking on this serial number and then pressing delete button from the keyboard. I clicked on delete button, so it is reversible activity. Confirm to delete serial number 3. If I click yes, that item will be deleted. Now along with shirt, I have shirt cotton. So let me take you through this shirt cotton. 700, 175 and 895. This is the fabric figure and this styling figure. If I double click on this styling measurement for shirt cotton, you can see the list of measurement terms created. These measurement terms are actually, as we have discussed earlier, can be configurable, remover added. So copy from blazer, I'll select enter,
10, 20, 32. These are the measurements which we saved for blazer, as it's not very easy or it's not decent for you to ask your customer to stand by again to take the same measurement which you had taken for the blazer. So at this moment you will be copying rest of the measurement from the blazer, and only those measurements which were not available in the blazer measurement script, you will be adding those measurement terms. You will be capturing those measurement terms of the customer. At this point, let's say 12 is the sleeve length for half, and armhole should be 13.5, and let's say cuff should be 3.5. So this way you can record the measurement terms. And on right hand side here you can find that collar regular is the default color which is already selected before you. You haven't selected it, it is already there. That is the default styling. If you select some default styling, it will load you that way. Pocket 2, fit comfort, cut slack, front putty box. So these are the styling. Along with this, if you understand that these customization should have a charge and that should have a separate charge, so what you can do is you can just go here. Here are the pattern charges. There is a field pattern charges. So here you can understand that for shirt we have given 175. But if you think blazer should be charged 485 rupees for this customization, you can do that, and accordingly the price of the article will be, price of the bill will be changed. Now this is the salesman area. So as we don't have a salesman in the system at the moment, we will not be selecting them. Let it be. We'll give you a next tutorial to learn how to create a salesman, how to select them. Now let us go ahead with the advanced figure. For example, the fabric value is 7895 and tailoring value is 14245. So it is total 22140. If I say I'll just enter, I'll just go 12,140, means customer has given this much of figure. Say enter. I have cash mode also, payment mode, card swipe, check, others, and cash. So basically, as the cash is the most transactional value in the in market, we'll be selecting cash. Go ahead, enter, and now save it. So once you save this, you will see the order has been created to the customer, and SMS is also sent to the customer's mobile. This is the order copy which you had expected, which you wanted. Okay, after which you may be willing to give it to your customer once the order is booked. Now you can see this order invoice is partially blank from the top. It is because it is an it is an letterhead format pre-printed paper in which the business name is already printed from the already printed on the page with the business logo and all sort of other information. Rest information which is not printed over there and that is very specific to the order will be coming from the software. For example, the customer name, mobile number, email ID, or whatever the information, order number, order date, trial date, delivery date, everything will be coming from the software, and only the static information, whatever they find it convenient, they will keep it on their invoice format, pre-printed. Now once the order invoice is printed, the another most important thing is to print the measurement. So for that sake we will need to click on print measure. If I click on print measure, it will show me list of item. All item those are having measurement only. If there are 5 shirts and you have taken measurement on only one shirt, so it will show you only one shirt. Now if I click on print column wise button, if I click on column wise button, here I can see these two measurement terms are already printed together. Okay, 22 June the order date is, and delivery date is also 20 June. Why? Because the delivery date is always printed for your worker with 2 days of gap, with 2 days of gap with the actual delivery. So your actual delivery is 22nd June, and accordingly it will be printed. Yeah, that software was not functioning. Okay. Now here you can see. We have booked an order, as we have seen in the last page. We taken the advance, we have printed the invoice. Okay. Did you see the invoice printed? This would be the invoice. Okay. So basically it's a partially printed, means partially blank from the top, because it is something like a letterhead fashion.
letterhead type of pre-printed bill. Means the business has already printed his logo and business information at the top, and rest page was blank. So order specific information is getting printed from the software. A5 landscape. So even if you want to go for a A5 portrait, we can design that way also. We have n number of designs already in the application. It's the A5 landscape paper. Now, once you take the invoice, once you print it, once you give it to your customer, he is out of your store. Okay, he is went off. Now the second important thing, as you said, you need a job card printed against the order itself. Once the order is booked, you want a job card. So that feature is actually available in TailoBill itself. That is the standard feature what we have. Once you book an order, you need to take a printout of the job card. So let me click on this print column wise option. It is actually showing you the list of items which you have actually taken measurement for. Okay, if you have 5 shirts and you have recorded measurement on only one shirt, it will show you only one shirt. Okay. Now here you can see the list of measurement terms what we have used. Everything is shown here. Okay, button single, styling, remarks with 200 character, everything. Okay. So this measurement slip you can take care of and keep it with the fabric and give it to the worker later. Okay. Now once the job card is done, I'll show you one more thing is print design note, because out of 3 items, for one item I had assigned attached one design picture. Okay, so whatever the picture you have recorded or received from the customer or downloaded from the Google or having your computer, you attach it from there. You can take a printout of that in the job card. So similarly, similar picture can also be printed in the Darzi ware. But that design is with my development and technical team, so I could not actually show you at the moment. Okay, so this way you will be able to see the design pictures attached with the order. Okay, now once this attached, once this measurement slip taken out, if you want to have a barcoded tag, okay, with each item, as you said, you may not be willing to have that barcoded tag printed. Okay, so there are certain people, those who want to take the printout of the barcode tag. Click on this print barcode tag. So barcode tag will be printed in the barcoded format. At the moment it is printing only number 1122, 1123 and 1121. But this is not the actual way. We will be printing it in a barcode fashion itself. Okay. Now these barcode tags will be done. After that, I'll exit this form. I'll refresh it. हाँ डेफिनेटली दिखेगा ना क्या होता है. If barcode scanner is not functioning for today, we cannot hold you a person, right? For example, sometimes barcode sticker में कुछ flaw आ गया, कुछ ink fade हो गई, और that is not scanning properly. तो आपको वहाँ नंबर दिखेगा, तब आप मैन्युअली नंबर एंटर करके आगे बढ़ा सकते हो चीज को. Similarly, as we do in the big bazaar or some other stores, DMart में ऐसे है. Now, once the order is booked, you have taken the invoice, you have given the invoice to the customer, you have taken the measurement slip out, and you have kept that invoice, kept that measurement slip with your fabric. The time will come when you will be willing to assign that job to your master. Okay? So let me just activate the master process first. As the master process is not the standard process in all sort of configurations, all sort of business models. Master process is not everywhere used, because in 70% cases the tailoring shop owner himself is a master, so he only cuts the fabric and he owns only the tailor people with him. Okay, so master process is not exactly used many times. Hold on, just give me a minute. Hello. Yeah. So the second thing is we need to go to dispatch to workshop button. Dispatch to workshop. Click on this dispatch to workshop. So it will show you list of items waiting for the master process. Okay. So basically, as you have this process, what you said, requisition process will be missing in this case.
Okay, it is actually waiting for the cutting division to assign. Now on right hand side you can see the list of cutters I have in my system. Okay, I have only Salim at the moment. For example, as the demo begins, I'll show you how to add a master. For that, we'll go to workshop master button. Okay, this is generally a kind of training. I'll say workshop master. I'm adding seventh employee. His name is. Uh, Give me a minute. What I say is Asif. Yes, I'm creating a worker name. Asif. Enter in out. Enter per piece. He'll be paid per piece. So commission or fixed. I'll say fixed. Commission actually works. Commission system works under in South India and in Mumbai also in few cases wherein a fashion designer works. Okay. In fashion designer, what happens is one gown can be made in 5-6 days also or 2 days also, depending upon the job work. So if they set it up for fixed cost, a worker will be making only one gown for 10 days or making one gown in a day only. So the charges are not actually justifiable. So they keep it on a commission. Whatever the pricing is 10,000. So let us set it up 40, 60, 30, 70, 50, 50, whatever. And people are doing good job. Okay. Now this is another. Let's go ahead, and the other thing is cutting master. I am saying Asif is my cutting master. He is not a tailor. He is not a ultraman. And enter is the save. Now I will have to set up the rates. Similarly, as we have done in the Darziware application, here we'll select Asif. I will select blazer. Enter. So it is cutting master. As the blazer cutting, he will charge 150 rupees. Enter. Okay. So this way, the Asif is added for a blazer cutting. Now I have exited that form. Let us go to dispatch to workshop. Here you can see again Sahil Sood is the customer and Prajakta is the customer listed on top. Okay. Prajakta having two blazers showing in red color means it is the urgent item. These are the urgent items. And Sahil Sood having three pieces but none of them are urgent. So for blazer on right hand side you can see Asif and Salim. There are two colors available. But for shirt cotton we have only Salim. Okay. For shirt we don't have a cutter for shirt. We don't have a cutter for kurta new and these items. Okay. For bandi we have a cutter Salim. So similarly we need to map them from the worker rate mapping. Let us say Salim will be cutting this blazer, Salim will be cutting this shirt cotton, and we are giving everything to Salim at the moment. 5 pieces we have given to Salim. Now we need to save. Whenever we will save, system will ask us the rate, means the assigned date. Okay, when it was assigned. So if it is the current date activity, I'll choose the same date and I'll save. If it was somewhere, suppose for some reason it was the day before yesterday activity and tomorrow, yesterday was the holiday, so you can choose the backdate from the assign this one. I'll show you assign date. Assign date calendar is given here. You can choose the assign date from this calendar and click on save. So the backdated assignments will also be done. But it will not be possible for anybody to reassign the same thing to any other worker or same worker again and again. Once it is assigned, it is moved out of this queue. Okay, it will not be listed anywhere on this screen and you will just need to click out, exit and come out of this. Now the time taken by the tailor master to cut it may be 2 hour, 4 hour, 1 day or 2 days, whatever. Depending upon that, you will go to update status screen. Okay, this update status screen will be used to collect back the outfit or material from the worker. So let us select Salim first. Once I select Salim, it will show me the list of items given to the Salim. It is not actually show. Yeah, you will. If you want to scan the barcode, you will be able to. At the moment, that is not there, but we can make that way. That is not a big deal. At the moment, we are keeping it as manual. So it is something like selecting manually.
Okay, this is received, this is received, because it's a very hectic thing, and there would be a lot of items assigned to a worker. Selecting one by one is a uh, what we say as a time taking and a critical process, and there is a there are a lot of chances of the human error. So we can give you a barcode based scanning system, wherein if you scan the barcode, it will select automatically, it will find the piece and select it automatically. Okay, after that we will need to click on the receipt button given below. Okay, there are two more buttons, ready for trial and release this worker, but these two buttons are not applicable for the cutting process. Okay, for cutting process these two buttons are not applicable, so I am not telling you at the moment. I'll tell you once. यूज कर सकते हैं आप, मैं आपको एक्चुअली अभी फंक्शनैलिटी समझाया नहीं था. अच्छा हाँ, सॉरी, ready for trial release this worker I have already explained to you in Thursday, right? Right, that is why you are having the idea. So what I thought is ki you must not be knowing it, so I will be explaining it while coming back to you with the tailoring order. At the time I was supposed to explain it. But of course, release this worker can be used for cutter also and for tailor also. But ready for trial cannot be done at the cutter stage. That is why it is not useful at this point. Received button. Now let us go back dispatch to workshop. As in Darziware, you could have seen only tabular based architecture. One tab was for assigning and other tab was for collecting it back. In this application, there are two pages, two forms actually. One is dispatch to workshop, another is update status. So initially we assigned to cutter, from update status we collected it back. From dispatch to workshop, we'll go again, but on cutter tab it will not be listing anything. Okay, it is not showing anything, but on tailoring division it will show me the list of orders which I had assigned for Sahil Sood and for Prajakta, for Sachin, for Kunal Mehta. Everything is shown there. Okay, so let us say Sahil Sood blazer. Now you can see on right hand side Akshay, Deepak and John. These three people can make blazer. So to whom you want to give? I want to give Deepak. I want to give Deepak. Now shirt cotton. Shirt cotton. Double click, only double click. Okay. हाँ हाँ, असाइन हो गया. अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. ये जो सेंटर कॉलम है ना, यहाँ पे आप देखो ग्रिड में दीपक दीपक जॉन जॉन दीपक दीपक. ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट अमाउंट. Okay, just Deepak, next to Deepak amount is there, 400 rupees. So this is like how much Deepak will take to make this blazer. Okay, and how much the person will take, John will take to make this blazer, 50 rupees. So accordingly it will be also calculating the charges per piece making charge. Okay, now let me save it. Whatever the pieces we have assigned, we'll save it. So as soon as we save it, it will be gone to the tailor. Okay, now nothing is visible once it is assigned. Sahil Sood, we have one piece which is not yet assigned. So let me just assign it to Altaf. Sahil Sood, I have assigned Altaf for it, making this shirt cotton. Exit it. So let us see what is the status. For example, at the moment, customer gives you a call at the evening hours, as you said you get usually you receive calls after 4, after 3. So you can just go to search order. In search order, you can just enter the order number. So yeah, you can scan the order barcode. At the moment, there is no order barcode in this feature. Order number we have, or customer name we have, mobile number we have. Out of these three parameters, you can use it. But because as you must be sitting in your office, you must be sitting in your home. If someone is giving you a call, you would be actually interested to ask the order number from him. What was your order number, or what mobile number did you use to book an order, or what was the customer name you are talking about. So if you say Sahil Sood, what you have to do is you have to just enter Sahil Sood. So it will bring you the list. Okay, whatever the orders are booked for Sahil Sood. Now in this, there were three items: blazer, shirt, and blazer. But the blazer was given to Deepak. Altaf has taken shirt,
and again Deepak has taken the blazer. So two blazers given to Deepak, one shirt given to Altaf, and it was given on 22nd June 2017. Item status is in process, in process, in process. Two columns are still blank, which is ready for delivery on and delivered on. Okay. So when it was ready for delivery and when it was delivered. To see when it was ready for delivery, we'll go to update status, considering that after 2-3 days of gap, worker has bought us the fabric or outfit. Okay. Clicking on update status will again show you the same form. On left hand side, it will show you list of workers. Let us click on Deepak. It will show you on right hand side list of items which was assigned to the worker Deepak. I click on this. Two items has been selected. Now the another challenge is, once you get the ready for delivery outfit, you hang them in a hanger, or you hang them in a this one rack in your store. But sometime when customer is at your store, you usually do not remember when it was actually kept. Okay. Now you are hunting for it in your store and finding it somewhere after 5-10 minutes. Okay, fine, I found it somewhere. So this way you can use this feature. Instead of okay, you can write your rack number. Okay, and this rack number will actually help you to identify or to find that item immediately. Okay. Now there are three reasons this screen can be used. One is when the item is ready, so you can tell them is ready for delivery. If the item is ready for trial, customer or tailor has made it a loose fit or kacha fit, just for the provisional fit, just for the customer to try and say how is it. So you can take it for ready for trial. The third thing is, if you understand that worker is not capable of making this item in a given time frame, you will be able to take that item back from the worker, release that worker from the given job, and assign that same job to someone else. Okay, so let me exit this. I have collected two pieces of work for the order Sahil Sood. I go back to the search order, considering that customer has called me now. So last time it wasn't called. That was just a run. Now suppose customer has called you 22nd June and 22nd June. It is ready for delivery. RFD is the status for ready for delivery. Now delivered, there is no list. So basically, for this one, yeah, right. Once you get the settlement, it will be considered as delivered. Now, once two pieces are ready, one piece is not ready, so customer will not receive any SMS intimation of the order status. But as soon as the fourth item or third item of the order will get ready, all items will get ready, and if you click on receive button, customer will receive an SMS. If you see a random number on the screen, the number which you can see at the moment right now is the acknowledgement from the SMS server that the SMS has been successfully sent. Delivered, it can be delivered in 4 to 5 seconds maximum. Okay. Now, as we have collected all three pieces, the search order will show you all process as ready for delivery. All items are in ready for delivery. Now, if the customer is at your store and willing to have a delivery, you can click on deliver order button. If you click on deliver order button, it will show you all the items which are pending for delivery. And this screen is not only for ready for delivery. You can also see what pending items are there in the system. Okay, what in process items are there in the system, what in trial items, what ready for delivery or delivered. क्या देखना है आपको? तैयार है या नहीं है तो वो तो आप सर्च ऑर्डर में देख सकते हैं. हाँ, कहाँ अटका है वो आप नहीं तैयार है तो वो आपको सर्च ऑर्डर में वैसे भी दिख जाएगा ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम नहीं है, कटर और टेलर ही है. तो या तो ये इन प्रोसेस होगा, या तो रेडी फॉर डिलीवरी होगा, या फिर पेंडिंग होगा. पेंडिंग होगा मतलब अभी किसी टेलर को दिया नहीं गया. ठीक है. अगर इन प्रोसेस है मतलब टेलर को दे दिया, अभी तक वापस नहीं आया. अगर RFD है तो
कैसा दूं? स्टेटस देने के लिए मेरे को उसको फ्लैग भी सेटअप करना पड़ेगा ना कहीं से आपको उसको मार्किंग भी देनी पड़ेगी जहाँ से आप इंडिविजुअल ऑर्डर को मार्क कर सके कि इसका रिक्विजिशन हो गया। हाँ हाँ, वो तो सही है आपकी बात, मगर एक्चुअली ये जो है ना, ये प्रोसेस बढ़ाना जो है ना, ये अभी यहाँ पे जो है स्टैटिक प्रोसेस है। मतलब कटिंग डिवीजन और टेलरिंग डिवीजन स्टैटिक है। रिक्विजिशन प्रोसेस स्टैटिक बनाई जा सकती है, बट ओवरहेड बढ़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होगा ना, वो एक तो फुल्ली सेटिस्फाई भी नहीं करेगा सबको, और पार्शियल सेटिस्फैक्शन के लिए बचेगा सिर्फ। मतलब आपके लिए फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा, बट जो दूसरे रहते हैं उनके पास में और भी चॉइसेस। मैं देखता हूँ, चलिए ठीक है, एक बार पूरा सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। इफ वी फाइंड ये रिक्विजिशन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन मतलब सूट नहीं कर रहा, तो विल डू समथिंग। अगर वहां पे ज्यादा गैप मिलता है ब्रिज करने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ दिस गोइंग फॉर ऑनलाइन विल बी बेटर। अगर शॉर्ट गैप है तो वी कैन कवर दैट गैप, नो इशू। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमने ऑर्डर बनाया, वर्कर को दिया, वर्कर से लिया, कस्टमर का मेजरमेंट दिए, सब हो गया। अब दो चीजें हैं, एक तो वर्कशॉप रिपोर्ट। ये जो वर्कशॉप रिपोर्ट है, ये वैसी रिपोर्ट है जैसी आप मांग रहे थे। ठीक है, जैसे आपने मेरे को अभी रिक्वेजिशन और ऑर्डर वाले दिखाए थे, मगर ये थोड़ी अलग टाइप की है। ये कैसी है? यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑर्डर दिखाया जाएगा। पहले 3 ऑर्डर देखिए आप, ऑर्डर नंबर 2 ही है। मतलब ऑर्डर नंबर 2 अश्विन कुमार के है, जिसमें पहला आइटम शर्ट कॉटन, दूसरा ट्राउजर कॉटन, तीसरा जुब्बा कॉटन, ऐसे लिए तीनों 1 1 पीस है। फिर इसके स्टेटस वाइज ट्रैकिंग है, पहले स्टेटस में कितने हैं, दूसरे स्टेटस में कितने हैं, इन प्रोसेस स्टेटस में कितने हैं, ट्रायल स्टेटस में कितने हैं, आरएफडी में कितने हैं। जैसा आपके इसमें था, ऑर्डर आज के दिखा दो, फिर उसके बाद दिखा दो आज के रिक्विजिशन कितने हैं, आज के ये कितने हैं, आज के ये कितने हैं, बराबर। तो उस तरीके से ये आज के बोल के नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा टोटल रिक्विजिशन कितने हैं, टोटल मास्टर पेंडिंग कितने हैं, टोटल इन प्रोसेस कितने हैं, उस टाइप से। हाँ, तो ये वाली एक चीज इसके अंदर है, जिससे अगर अपन रिक्विजिशन चीज डालते हैं इन केस, तो मेरे को ये भी ऑल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया वर्कशॉप रिपोर्ट। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डिलीवर। इफ आई गो टू डिलीवर ऑर्डर, डिलीवर ऑर्डर में देखिए आपको एक फीचर चाहिए जहाँ पे आप उससे क्रेडिट बिजनेस नहीं करना चाहते। ठीक है, क्रेडिट बिजनेस अगर करते हैं तो अपनी तरफ जबरदस्ती ओवरहेड बढ़ जाता है। मतलब कि वो पैसा बाकी रख के गया, अब कब आएगा कब नहीं आएगा, वो सब अपने को सोचना है। उससे अच्छा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिस्टम है, डिलीवर आइटम्स ऑन फुल पेमेंट ओनली। मतलब जब पूरा पैसा आ जाए तो ही डिलीवर करना है। तो इसको सेव कर दो, एग्जिट कर दो। अब चलते हैं जैसा वर्कशॉप, डिस्पैच टू वर्कशॉप। नहीं, अपन डिस्पैच टू वर्कशॉप में नहीं जाएंगे। एक सेकंड, हाँ? क्या देखे थे अभी अपन ने? हाँ, डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवर ऑर्डर में गए, यहाँ पे आपका जो कस्टमर है साहिल सूद, इनके नाम से डिलीवरी करना है अपने, इनका ऑर्डर डिलीवर करना है। तो इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑर्डर का पूरा समरी मिलेगा। क्या क्या लिए थे, कितने का लिए थे, फैब्रिक का अमाउंट कितना हुआ था, टेलरिंग का अमाउंट कितना हुआ था, उसमें से कितना पे कर दिया और कितना बाकी है, ये पूरा टोटल लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर कस्टमर का नाम, वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। ठीक है, अब अगर सपोज ऐसा हुआ कि कस्टमर अभी एक ही आइटम ले जाना चाहता है, तो सिस्टम इज नॉट अलाउिंग, अमाउंट इज नॉट सेटल्ड फॉर दिस आइटम, कैन नॉट डिलीवर। ठीक है, अगर मैं शर्ट कॉटन सेलेक्ट करता हूँ, अमाउंट इज नॉट सेटल्ड फॉर दिस आइटम, बिकॉज इसका जो टेलरिंग फिगर है वो सेटल नहीं हुआ है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सपोज 9,000, 1,000 रुपीज बैलेंस कैश। अब यहाँ पे मैं देखूंगा ब्लेजर सेलेक्ट करके, अमाउंट इज नॉट सेटल्ड बट एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे ये एक्सेप्ट भी नहीं करता, कुछ वो कंडीशनली फ्लॉ हो रहा रहेगा, क्योंकि ये हमारे बैंगलोर के एक ही कस्टमर यूज करते थे, जिनका बिजनेस एकदम मतलब रीड एंड टेलर का शोरूम था। तो रीड एंड टेलर के शोरूम में उधारी देते नहीं है ना, रेम एंड रीड एंड टेलर क्रेडिट बिजनेस नहीं करता। तो उनके लिए ये फीचर डाल दिया था कि उधार में बिल्कुल भी नहीं देना, जिसका पैसा बाकी है उसको नहीं देंगे।
तो ये सेलेक्ट करने के बाद कैश इन हैंड वगैरह करने के बाद डिलीवर करने से पेमेंट वाउचर प्रिंट हो जाता है। और पेमेंट वाउचर प्रिंट होने के बाद पेमेंट के टाइम पे भी अगर आपको कोई स्लिप कस्टमर को हैंड ओवर करना है, मतलब जब आप कस्टमर ने पेमेंट ले लिया, डिलीवरी ले लिया, अब उस टाइम पे भी अगर आपको कोई स्लिप हैंड ओवर करना है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद आपका रेडी फॉर डिलीवरी हो गया और डिलीवर हो गया। अब आपको एक लास्ट चीज़ बचती है, वर्कर पेमेंट। मैंने आपको अभी न्यू ऑर्डर दिखाया। नहीं तो वो कैसी होगी, बताता हूँ। यहाँ पे न्यू ऑर्डर टाइप में आप जब एफओसी सेलेक्ट करके एंटर दबाओगे ना, तो एफओसी की ही लिस्ट आ जाएगी। अभी एफओसी का एक भी ऑर्डर नहीं है। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन, हाँ बताता हूँ। ऑर्डर सीरीज मास्टर में गए, यहाँ पे पहले एफओसी के लिए अपन एक ऑर्डर सीरीज बनाएंगे। एफओसी 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 ये हो गया आपका एफओसी वाला एक सीरीज। अब अपन न्यू ऑर्डर में गए, न्यू ऑर्डर, ये एफओसी, यहाँ पे आपको ऑर्डर सीरीज, जी समझ गया मैं आपका, वो बात में समझ गया। यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे आप एफओसी पहले ऑर्डर टाइप चूज करेंगे, ठीक है, कि नया ऑर्डर पंच हो रहा है एफओसी के लिए, ठीक है, एंटर दबाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर सीरीज आएगी जो आपने अभी सेलेक्ट की थी डिफॉल्ट वाली, और उसमें आप ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर नंबर में से पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल आइटम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आया। एक ऑर्डर में 5 कुर्ते गए थे मगर एक ही कुर्ता आया एफओसी के लिए, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करने का प्रोविजन रहेगा। ये पूरा फ्रेम उसी के लिए दिया हुआ है। सिर्फ इतना हुआ है कि हमने जब सीरीज का काम किया ना, उसके बाद से हमने ये अपडेट नहीं की। सीरीज हमने अभी रिसेंट डाले 4 महीना पहले, एफओसी हमारे पास 3-3.5 साल पहले से है, तो हमने इसको अपडेट नहीं किया था। तो ये क्या कर रहा है, करंट वाली सीरीज कॉल कर ले रहा है एफओसी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वो न्यू ऑर्डर वाली सीरीज कॉल करने का है। न्यू ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर नंबर चूज हो जाएगा। आपका 33 नंबर का ऑर्डर था और उसके नीचे के लिस्ट दिख जाएंगी, उसमें से जो आइटम चूज करेंगे आप वो इधर पीछे ऐड हो जाएगा। समझे ना आप? अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो मेरे को एक आधा घंटा देना पड़ेगा, मेरे को सोर्स कोड में से थोड़े माइनर चेंजेस करके निकालने पड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो सेम आपका जो पहले बुक हुआ था, जो कस्टमर को गया था, वही ऑर्डर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ इतना रहेगा कि इसका ऑर्डर नंबर और एफओसी सीरीज चेंज हो जाएगी। एफओसी सीरीज के हिसाब का ऑर्डर नंबर असाइन हो जाएगा और आप एफओसी के ऑर्डर्स को ट्रैक कर पाएंगे। प्रॉपर पूरा सेगमेंट नया हो जाएगा। सिर्फ पुराने वाले ऑर्डर में से डेटा कॉपी करके लेता है वो कि आप किस चीज को एफओसी में डालना चाहते हैं। और ये नॉर्मली भी है, मतलब आपका एक मैनुअल बुक है समझ लीजिए, और एक मैनुअल बुक एफओसी का है। तो एफओसी में जब आप लिख रहे होंगे तो आप अपनी ऑर्डर कॉपी पहले खोलेंगे, वो पर्टिकुलर ऑर्डर देखेंगे, फिर उसमें से आप एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, कौन से ऑर्डर का था, क्या था। तो वो लिंकिंग के लिए ये पार्ट है कि आप वो सीरीज से वो ऑर्डर नंबर को लिंक करो और उसका एक आइटम लेके ऑर्डर में लो और बुक करो। तो एफओसी उस टाइप से सिस्टम बनाया है। ये मेरा थोड़ा सीरीज का थोड़ा मतलब ये टेस्टिंग में नहीं था, हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया शायद कभी, तो इसलिए ये छूट गया है। तो यहाँ पे बस मेरे को न्यू ऑर्डर की सीरीज खींच के दिखाना है, वो आ जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये क्या होता है कि कभी कभार जैसे आप यहाँ से मल्टीपल स्कैनिंग करते हो, ठीक है, बारकोड स्कैन कर रहे हो, आप अभी बारकोड स्कैन कर रहे हो। मैनुअल वर्क में क्या होता है, कुर्ता कुर्ता 2 आइटम होते हैं मगर ऑर्डर नंबर चेंज होता है, तो नजर से कभी चूक जाता है और गलत आइटम इधर आ जाता है और असल आइटम उधर ही रह जाता है। तो अगर गलत इधर आ गया और आपको कोई चीज को वापस भेजना है तो आप यस दबा दो, तो वो चीज वापस वर्कशॉप में उसी वर्कर को असाइन हो जाती है। मतलब सेम सेम एज रिलीज दिस वर्कर है, मगर रिलीज दिस वर्कर में केस ऐसा था, रिलीज वर्कर के पास था, वहां से निकाल के हमने हमारे साइड ले लिया। मगर इसमें ऐसा है कि हमारे पास आ गया था, हमने वापस असाइन करके वर्कर को दे दिया, है ना।
तो ये उस टाइप से होगा। अभी मेरे को ये आइटम कौन सा सिलेक्टेड है पता नहीं, मैं ये दबा के देखता हूँ, देखते कौन सा जाता है। जॉन का जाएगा क्या 21 नंबर, जॉन का गया 21 नंबर जो लास्ट होगा। ठीक है, वो यहाँ पे आपको डिस्पैच वर्कशॉप में दिख जाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं दिखा पता है क्या? क्योंकि वो ऑर्डर बना था बिना कटिंग प्रोसेस और अपन ने भेज दिया उसको वापस, तो यहाँ से मेरे को बस ये कटिंग प्रोसेस डीएक्टिवेट करनी पड़ी। यहाँ पे आना चाहिए जॉन का संज्ञा। अच्छा नहीं, मैं डिस्पैच में ढूंढ रहा हूँ, वेरी सॉरी। अपडेट स्टेटस में जॉन का असाइन हो गया वो एक्चुअली वापस। तो ये था वो एंड्रेव का ऑर्डर नंबर 21, जॉन के पास था, निकल के वो डिलीवरी में था, रेडी फॉर डिलीवरी में, वहां से जॉन के अकाउंट पे आ गया वो। तो इस तरीके से ये एक स्टेप पीछे जाता है। फिर यहाँ से आप रिलीज दिस वर्कर करोगे ना, तो फिर एक स्टेप पीछे जाएगा। अगर आप बोलोगे कि ये वर्कर ने बनाया नहीं था यार, किसी ने तो गलत मार्किंग कर दिया, पूरा रेडी फॉर डिलीवरी तक आ गया वो, ठीक है, तो आप एक स्टेप पीछे भेजोगे वर्कर पे, फिर वर्कर से रिलीज करके पीछे ले जाओगे, फिर वहां से दूसरे को असाइन करोगे और लेकर आओगे। इस तरीके से होगा। इसमें वर्कर पेमेंट भी है, डिलीवरी जैसे अभी आपको दिखाया, वर्कर पेमेंट भी है। मेक पेमेंट टू वर्कशॉप में जाएंगे, यहाँ पे आप कंपनी पहले सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम डेट डालेंगे 01, एंटर। 016 से 22/6 तक आप यहाँ पे दीपक सेलेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, हम्म। एक सेकंड, मेरा बैटरी डाउन हो गया। हाँ, अभी दिख रहा है आपकी स्क्रीन? ऊपर जो आप देख रहे हैं सेलेक्ट कंपनी, उसके बाद 2 डेट्स है। अब ये डेट आपके वीकली हो सकते हैं, फोर्टनाइटली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, जैसा आप चाहो। आप 2 डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बीच में वर्कशॉप से एक वर्कर सेलेक्ट करेंगे दीपक, और आप शो करेंगे, तो इतने पीरियड में इस वर्कर ने जो भी काम किया पूरा लिस्ट हो गया। ठीक है। अब अक्सर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लेजर वाइज पेमेंट करवाते हैं। लेजर वाइज मतलब 10,000 का बिल हो गया तो 10,000 में से 5,000 दिया, 5,000 बाकी है। हमारे पास ये पर पीस के हिसाब से पेमेंट होता है। उसने कितने पीस बनाए? 50 पीस। आप कितने पीस का पैसा दे रहे हो? 25 पीस। उसके हिसाब से टोटल करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 5,400 है, आप बोलोगे 5,000 पेमेंट करना है, ठीक है, तो एंटर दबाओगे ना, तो ये 350 एडजस्ट नहीं हुआ इसका। इसने क्या किया, सबसे पहले छोटे फिगर वाले पूरे एक्सेप्ट कर लिए, 400 400, फिर 750 750, तो लास्ट वाले 750 को एडजस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि 4650 ही आप पेमेंट कर सकते हो ये ट्रांजेक्शन में, या फिर आप पूरा करो या फिर आप 4650 करो। ठीक है, आप आइटम इस तरीके से कैश पेमेंट सेलेक्ट करके सेव पेमेंट करेंगे तो पेमेंट सेव होकर ये ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार जब ये ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया, हाँ, आपका ये पेमेंट हो गया, तो जैसा मैंने आपको वहां पे दिखाया था, जॉब कार्ड का एक वर्कर पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप आता है, वो यहाँ पर भी आता है। राइट हैंड साइड पे आपको पेमेंट हिस्ट्री दिख रहा होगा, उसमें से मैं पेमेंट हिस्ट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ 4640 और क्लिक कर रहा हूँ प्रिंट पेमेंट स्लिप। तो मैंने इस 4640 में इस वर्कर को कितने पीसेस का कौन से क्या आइटम दिया, कितना पैसा दिया था, वो सारी चीजें यहाँ पे लिस्ट हो गया जाएगी। तो ये पीक डेज में, जैसे वर्क क्या बोल सकते हैं उसको, फेस्टिव सीजन में, पीक लोड में, जो आप बोल रहे थे कि आपके वर्कर का एक एग्जीक्यूटिव के साथ अरेंजमेंट होके, वर्कर के साथ अरेंजमेंट होके उन्होंने एक ही चीज को 4 बार पेमेंट करवा दिया, यहाँ वैसा कुछ नहीं होगा। ये जो ऑर्डर नंबर 17, ये मोनिका का ऑर्डर नंबर 17 है। अगर कभी आपके पास वर्कर आया, अभी बोला कि मेरे को 17 नंबर ऑर्डर का पेमेंट नहीं मिला, तो आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर 17 लिख के चेक पे क्लिक करिए, तो आपको दिखाया जाएगा कि इसमें 2 ब्लेजर थे, दीपक को दिया था, ये डेट को दिया था, ये डेट को वापस आया और इस डेट को पेमेंट हुआ। आपको एकदम प्रिसाइज दिखेगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि अरे नहीं ये तो मतलब, और एक ही बार हर चीज के साथ एक ही स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि 4 गिवन डेट हो सकती, 4 कंप्लीट डेट हो सकती, 2 पे डेट हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो है जैसा है क्लियर एकदम। तो इस टाइप से आपका जो है प्रॉपर वर्कशॉप मैनेजमेंट ये टेलरिंग के थ्रू। वेंडर पेमेंट मतलब वेंडर कौन आपके?
हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म। तो आपके लिए यहाँ पे ना परचेज एंट्री एक सिस्टम रहेगा फिर, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज का जब आप देखिए, दो टाइप की चीजें परचेज होती है, दो टाइप की, एक होता है एसेट परचेज, एक होता है ट्रेडेबल परचेज, ठीक है। एसेट परचेज होता है जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, है ना, ये आपके पास आ गया, खरीद के आया मगर बिकेगा नहीं। दूसरी चीज होती है आपने फैब्रिक खरीदा और वो बिकने वाला है आगे, तो ये इन्वेंट्री वाला परचेज हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम है, आप यहाँ से पेमेंट एंट्री में जाके पेमेंट कर सकते किसी भी वेंडर को, रिमार्क में लिख देंगे आप अस्तर वस्तर इस दिन में ये दिन पे ये इनवॉइस के लिए परचेज किया था, वो इनवॉइस आपके पास रहेगा उठा के, और पेमेंट एंट्री से ये अकाउंट डिपार्टमेंट पे F2। आपका माउस आ गया है वहां पे, हाँ वो लोड नहीं हुआ होगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन, वो उसमें पेमेंट एंट्री में। हाँ, जैसा जैसा आपकी जरूरत पड़ेगी वैसा वैसा हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, और इसके वीडियोस रहेंगे यूट्यूब पे, इसके वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, हम आपको हर एक चीज के वीडियो अवेलेबल करा देंगे। जब भी आपको लगा तो आप पर्टिकुलर टाइटल के हिसाब से पर्टिकुलर वीडियो की यूआरएल पे क्लिक करके यूट्यूब पे वो यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। डैशबोर्ड ये अपने आप अपडेट होते रहता है, आपको यहाँ पे बस रिफ्रेश दबाना है ऊपर, और आपके जो भी स्टैट्स है वो खुद ही लोड होते रहते हैं। आपको कुछ भी मतलब आपके मैनुअल अटेम्प्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मैनेजमेंट के लिए न्यू ऑर्डर बटन से ऑर्डर आपका शुरू होता है। Dispatch to workshop is the second process. Update status is the third process of work functioning, daily functioning. Deliver order is the fourth process, and account make payment to workshop is a weekly process. खुद ही अपडेट होते रहेंगे, ये खुद ही अपडेट होते रहेंगे। नहीं मतलब किस पे लेके जाता है? हम्म, वो यहाँ दिख जाएंगे आपको, डिलीवर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे नहीं नहीं वो फंक्शनल नहीं है, वो पेंडिंग क्या है 16 वो यहाँ दिखेंगे आपको, ये है वो 16, उसका एक्सेस अभी स्क्रीन लोड हो जाएगी आपको, देखो पेंडिंग स्टेटस वाले लोड हो रही है अभी आपको। ब्राउन कलर का मतलब ऐसा लाइट ब्राउन कलर का स्क्रीन दिख रहा है, मतलब लिस्ट दिख रही है, सबका आइटम स्टेटस पेंडिंग आ गया राइट साइड कॉलम में। ये कौन से है, ये एग्जिट कर दिया मैंने। यहाँ आपको पेंडिंग, इन प्रोसेस, ट्रायल और आरएफडी जो आपको डैशबोर्ड पे दिखा, आपको जो भी स्टेट देखना है, जिस स्टेट का भी डिटेल देखना है, ये स्टैटिक है, बट आपको यहाँ डिलीवर ऑर्डर बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ऑर्डर बटन पे यहाँ पे आपको स्टेटस वाइज लिस्ट मिल जाएगी, आपको जो स्टेटस डैशबोर्ड पे दिख रहे थे पेंडिंग वो भी दिख जाएंगे, इन प्रोसेस वो भी दिख जाएंगे, इन ट्रायल वो भी दिख जाएंगे, जो आपने वहां पे देखा था वो सारी चीजें यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगी। हाँ हाँ ये आ गया, ये शायद मेरे ख्याल से ना, अभी आप वो व्यू डिटेल स्क्रीन देख रहे थे क्या अभी तक? व्यू डिटेल बटन वर्क करते हैं ना वो? अब मेरे सामने तो डैशबोर्ड खुला है, आपके पास लोड हो जाएगा, आप माउस छोड़ दो, मतलब मेरे पास डैशबोर्ड खुल गया, हाँ अभी आपके पास खुल जाएगा। ब्लू माने टोटल डिलीवरीज, टुडेज शेड्यूल्ड डिलीवरीज, ग्रीन मतलब रेडी हो चुके, नहीं रेड हुआ, नहीं रेडी हुए, डिलेड है, नहीं हो पाया अभी तक, क्रिटिकल है, आज के डिलीवरीज है क्रिटिकल। हाँ व्यू डिटेल में वो आ जाएगा, अभी क्राइटेरिया का कुछ इशू दिखा रहा हो, एक्चुअली वो आता नहीं है इशू।